तो पुष्पा वो वैसे देखो पूरी तैयार होके बैठी है सिस्टमेटिक। सोनू दीदी भी पूरी तैयार होके बैठी है। तो पुष्पा वो वैसे देखो पूरी तैयार होके बैठी है सिस्टमेटिक। हमारी पाठशाला प्रमाणिक पाठशाला, मस्ती की है ये शाला और ज्ञान की भी शाला है। Let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, पाठशाला पाठशाला, ज्ञान की भी शाला, मस्ती की है ये शाला और ज्ञान की भी शाला है। Let's go to Pathshala, let's go to Pathshala, let's go to Pathshala, गरम मसाला। मोक्ष का रास्ता खुद बनाएंगे, जैन धर्म में जीना सिखाती है हमारी पाठशाला, प्रमाणिक पाठशाला, हमारी पाठशाला, प्रमाणिक पाठशाला। Let's go to Pathshala, let's go to Pathshala।
पाठशाला जाएंगे, संस्कारों से जीवन महकाएंगे, गुरुवर का आशीष पाएंगे, जैन ध्वजा को जग में लहराएंगे। हमारी पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला, हमारी पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला। Let's go to Pathshala, let's go to Pathshala, let's go to Pathshala, let's go to Pathshala. You created a और भाई राणा तुम सुन लेना जल्दी। जय जिनेन्द्र आंटी, पुष्पा आंटी, जय जिनेन्द्र। निर्मला आप ज्वाइन हो गए? निर्मला आंटी हो गए, ज्वाइन हो गए, सोनू हो गए? ठीक है, ओके। हाँ हो गई। हो गई। हाँ ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत हर्ष का विषय है आज कि हम आप सबको इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। ये हमारा प्रामाणिक पाठशाला का ग्रुप है और हम NRI से सब लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ भारत की पाठशाला के भी लोग हैं और देश विदेश के तो सारे हमसे जुड़ते ही हैं हमेशा। I would also like to invite UK Pathshala kids. They are joining for the first time with us. And Australia, we have a new wing started in Australia also recently. So some of the people will be joining from there also. And today we'll try to talk a little bit in English and a little bit in Hindi because people from all over the world are joining. Some will appreciate English, some will appreciate Hindi. तो हम दोनों ही भाषा को मिक्स कर कर आपको पूरा प्रोग्राम दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ हमसे त्रुटि होए तो हम बिगनिंग में ही आपसे क्षमा मांग लेते हैं, पर कोशिश यही है कि सारा सबको दोनों लैंग्वेज में अच्छे से सारी बातें समझ में आ सके। तो आपका वापस से बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ आज प्रतिभा स्थली की कुछ बच्चियां भी जुड़ी हैं और भी सब जगह जहां पर भी हमारे मैसेजेस गए और जहां से भी लोग जुड़े हैं उनका हम खूब खूब तहे दिल से स्वागत करते हैं। जय जिनेन्द्र। अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे और उसके लिए अंशु जी गोधा इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सिंगर हैं और उनका ध्येय यही है कि वो सारे जगत में धर्म की प्रभावना म्यूजिक और गाने से कर सके। तो हम अंशु जी गोधा जी को बुलाते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है अंशु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ड्रॉप हो गई वो। वापस ज्वाइन करने वाली होंगी। और इसके साथ ही अंशु जी के साथ आज हमारे साथ हमारी जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं श्रीमती निर्मला जी जैन। वो दिगंबर महिला परिषद की अध्यक्षा हैं और उनसे वो ही हमारा दीप प्रज्वलन भी करेंगी और हमारे लिए प्रेरणादायक बातें भी कहेंगी। निर्मला जी आंटी जो हैं बहुत ही कर्मठ और बहुत धर्मनिष्ठ और खूब सबको साथ में लेकर जाने वाली खूब विदुषी महिला हैं। उनकी अध्यक्षा के टेन्योर में दिगंबर जैन महिला परिषद ने बहुत प्रोग्रेस करी है और पूरे संपूर्ण परिषद को ही वो बहुत बड़ा सहयोग प्रदान कर रही हैं और खूब अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं उनके नेतृत्व में। उनका हम खूब खूब तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे साथ पुष्पा जी पांड्या जी भी हैं
जो कि वो भी इंदौर से हैं। पुष्पा जी पांड्या जी के लिए जितना भी कहा जाए कम है ना, जितना भी कहा जाए कम है। मेरे ऊपर तो उनके इतने उपकार है, बचपन से शी हैज बीन माय मेंटोर फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग। और जैन धर्म में से रिलेटेड तो जो भी मैंने कार्य करे हैं उनके उनके गाइडेंस में ही करे हैं बचपन से। सो आई एम ट्रूली ट्रूली ऑनर्ड टू हैव निर्मला आंटी एंड पुष्पा पांड्या आंटी। निर्मला आंटी के साथ भी मैं बचपन से जुड़ी रही हूँ और उन्होंने भी मुझे हमेशा मार्गदर्शन प्रदान किया है। और ये दोनों मेरी मम्मी की बहुत खास सहेलियां भी हैं, तो हमारी फैमिली फ्रेंड्स भी रहे हैं, तो बचपन से इनका साथ हमें हर चीज में, हर ओकेजन पर मिला है। पुष्पा जी पांड्या जी बहुत सुंदर आर्टिस्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर उनकी पेंटिंग्स होती हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, सोशल वर्कर हैं, खूब नॉलेजेबल तो है ही सही, और उसके अलावा समाज को एक नई दिशा दिखाने की और खूब उनकी क्रिएटिव सोच रहती है, और सबका हमेशा भला सोचना और हमेशा सबको साथ में लेकर चलना, ये उनके मूल गुण है। तो ये दोनों महिलाएं इतनी गुणी हैं कि हम उनकी जितनी तारीफ करें वो कम है। पर आई थिंक अब अंशु जी ज्वाइन हो गए हैं, तो अब अंशु जी से हम मंगलाचरण की शुरुआत करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलकारी अमंगलहारी नमोकार की महिमा न्यारी मंत्र नमोकार महामंत्र नमोकार मंत्र नमोकार महामंत्र नमोकार। नमो अरिहंताणं नमो सेठाणं नमो आयर्याणं नमो उवाचायाणं नमो लोये सर्व साहुणं नमो लोये सर्व साहुणं। ऐसो पंचन मकारो सब पाव पनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सुंदर आपने गाया। आपने खूब अच्छी हमारे कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिएगा आगे भी। और अब हम बुलाते हैं निर्मला जी आंटी को। शी इज अ पर्सन विद इम्पैकेबल पर्सनालिटी, सो कुछ भी कहा जाए वो उनके लिए बहुत कम है, एंड शी इज डूइंग एन अमेजिंग वर्क फॉर समाज। सो लेट्स हैव हर। इट इज ट्रूली एन ऑनर टू हैव हर। सो आंटी पहले कुछ प्रेरणादायक हमें कुछ शब्द बोलेंगी और उसके बाद दीप प्रज्वलन से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सरकारी जी। परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, प्रखर वक्ता, भावना योग के प्रणेता, पाठशाला प्रमाणिक NRI पाठशाला के प्रवर्तक, गुणायतन के स्वप्न दृष्टा, परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणारविंद में सशत नमन। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामना बधाई। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद न्यूयॉर्क सिटी की अध्यक्ष
शेफाली जी, सचिव प्रतीक्षा जी और कोषाध्यक्ष मीना जी, आप और आपकी टीम को केंद्रीय महिला परिषद की ओर से परिषद परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन। एनआरआई पाठशाला के माध्यम से बालिकाओं को गुरु के आशीर्वाद से जो जनत्व के संस्कार दे रहे हैं, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। इसी कड़ी में दीपावली के परिषद की प्रोजेक्ट कर्म का स्वरूप अवसर के अनुरूप को चरितार्थ करते हुए आपने आज जो दीपावली स्पेशल कार्यशाला का आयोजन किया है, उस कार्यशाला के माध्यम से आप जैन आगम के अनुसार पुरातन संस्कृति के साथ लेकर अहिंसक दीपावली कैसे मनाई जाए और अहिंसक तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए बिना कृत्रिम मिलावट के प्राकृतिक चीजों से रंगोली, पारंपरिक मारने, मिठाइयाँ, साज सज्जा की सामग्री बनाने का जो प्रशिक्षण देने का आपका संकल्प है और अनुकरणीय है और अनूठा है। आप अपने अभूतपूर्व प्रयासों की मैं आपके अनुमोदना करती हूँ और आपके कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको शुभकामना देती हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इस कार्यक्रम से, आपकी कार्यशाला से लाभान्वित हो, यही मेरी भावना है। आप अपने कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो, अपने अभिप्रेत में सफल हो। गुरुदेव का वरद हस्त आपके सिर पर सदा बना रहे, इसी भावना के साथ आइए हम दीप प्रज्वलन पर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इस दीपक से ही ये आशा है कि अंधेरे में उजाला कर दे, भले ही रोशनी थोड़ी सी है, पर उम्मीद का दिया तो प्रज्वलित कर दे और हम सब ईंधन बन जाएं और अनवरत जलकर ज्योति प्रदान करें। दीप जल उठाए और हम सब संकल्पित थे इस ज्योति को सदैव अक्षुण्ण प्रज्वलित रखने के लिए। धन्यवाद शेफाली जी, आपने मुझे सबसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया, मान दिया। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद, आभार प्रदर्शित करती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आंटी, आपने इतने अच्छे प्रवचन बोले और हम लोगों को इतनी प्रेरणा दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं, उससे पहले जयकारा लगाते हैं। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। तो अब मैं बुलाती हूँ हमारे पाठशाला की कोऑर्डिनेटर, हमारे साथ जो है प्रतीक्षा जी। She is one of our coordinators and she is doing fabulous work. She is actually the backbone of our organization right now and she handles so many things so beautifully. तो उनके धर्म प्रभावना के भाव को हम नमन करते हैं और उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। वो हमारे नेक्स्ट वक्ता नितिन जी अजमेरा को इनके बारे में कुछ बताएंगी। और नितिन जी को तो आप जानते ही हैं, वो मेरे पति भी हैं एंड हमारी मतलब सब चीज़ों में वो बहुत सहयोग देते हैं और हम लोग जो भी कर पाते हैं उसमें उनका पूरा सहयोग पूरी तरीके से, हर तरीके से हमको मिलता है। तो हम उनके बहुत आभारी हैं और प्रतीक्षा जी उनको इंट्रोड्यूस करके और फिर उनसे हम शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि हमारा प्रोग्राम ये हमने जो रखा है वो किस लिए रखा है और उन टर्मिनोलॉजीज को भी समझकर हमारा नॉलेज आगे बढ़ाएंगे। जय जिनेंद्र सभी को। First of all, I want to wish you all a very happy Diwali. I hope this Diwali bring prosperity and peacefulness in your life. And I wish that you celebrate this Diwali with ahimsak, biodegradable and eco-friendly way.
So we have been promoting this thing that we should celebrate Diwali in ahimsak way and biodegradable, eco-friendly way. So, but what does it mean? So, to understand that, I would like to invite our own Pathshala teacher, Nitinji Ajmera, who is teaching Chadala to adult classes. He is also a chairperson for Parliament of World Religion, and he is a CFO of Renewal by Anderson. So, Nitinji, can you please tell us that what is the difference between all these terms and how it is related to ahimsa? आप म्यूट पे हैं. जय जिनेन्द्र सभी को दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं. भगवान के मोक्ष कल्याणक की, गौतम गणधर भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक की, और सरस्वती माता के द्वारा हमारे को जो आगम प्राप्त हुए हैं उन सब के लिए ये त्योहार हम मनाते हैं. और जैसा कि महाराज श्री ने कहा, प्रमाण सागर जी महाराज ने, कि कहीं पर हम लोग की जो पारंपरिक विधियां हैं वो शून्य हो चुकी हैं और आज जरूरत हो गई है कि हम उसे वापस लाएं. और पाठशाला एक बहुत सुंदर माध्यम है कि ये बीज हम वापस अभी बो दें, ताकि ये जब बच्चे आज से 40 साल बाद बड़े हों तो इनको ये पता रहे कि सही तरीके में दीपावली कैसे मनाते हैं. तो आजकल के समाज में बहुत सारे टर्म्स हमको सुनने को मिले हैं जो अहिंसा से अलग नहीं होकर बट अहिंसा को सपोर्ट करते हैं, और उन कुछ टर्म्स को यहाँ पर मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा. और जैसा कि शेफाली ने पहले कहा, इंग्लिश और हिंदी दोनों का सामंजस्य बिठाए रखेंगे ताकि सबको समझ में आ सके. और तो सबसे पहला शब्द जो हम आज बहुत सुनते हैं वो है वीगन, कि हम वीगन हैं, राइट. और वीगन का कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर एब्स्टेनिंग फ्रॉम द यूज ऑफ ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स. सो कोई भी एनिमल का प्रोडक्ट हो उसको यूज नहीं करना, उसे वीगन कहते हैं. उसमें वो लोग, वीगन मीन्स अब अगर एनिमल का प्रोडक्ट है तो दूध तक का भी निषेध है उसके अंदर. दे डोंट ड्रिंक मिल्क ईदर. एंड फॉलोइंग अ वीगन लाइफ इज बेसिकली a concept where you do not use any animal product in any part of your life, right? So it's not just about eating, kids, it is also about not using leather products, right? Or anything that is made out of animal product, we don't use it. We don't use fur, we don't sit on leather things, we don't use kind of any silk products that are coming from harming any animals. So all these things are not used, and it is just not about eating, but it's about a whole lifestyle of not using animal products. दूसरी चीज veganism से हम बोलते हैं if you are vegan you are eco-friendly. अब eco-friendly में हम यहाँ कह रहे हैं that it is something that is safe for the environment. पर्यावरण के लिए इसमें कोई दोष नहीं है, और कहीं ना कहीं ये over time अपने आप धरती में, पानी में, हवा में, वायु में, आग में मिल जाता है. दैट इज इको फ्रेंडली, राइट. और उनको हार्म नहीं करता है. तो आप प्लास्टिक की बोतल लें, राइट. आप कहेंगे कि प्लास्टिक की बोतल में क्या प्रॉब्लम है, राइट. वो तो माने वीगन है, कोई एनिमल को मारकर नहीं बनाई गई है. हाँ, प्लास्टिक की बोतल इज a useful thing, but it is not eco-friendly. It will last in the environment for years and years and millennials. And फिर उस बॉटल के ढेर का हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे? तो इको फ्रेंडली इज समथिंग दैट डजंट स्पॉइल द एनवायरनमेंट. इस क्लाइमेट, पर्यावरण को वो नहीं खराब करता है. अगला चीज, हमें जो चीज इको फ्रेंडली है उसको पूछा जाता है कि इज इट सस्टेनेबल. सस्टेनेबल से हम कहते हैं इट मीन्स द अवॉइडेंस ऑफ द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट. तो जो भी प्रोडक्ट हम यूज करें, it should be sustainable. Sustainable means something that can be used again and again for a long time and doesn't damage the environment. It is not a one-use product, right? And if it is a one-use product, we'll come to the next word, where it can be reused again or it decomposes very fast to get to that point. So sustainable is something where
you just don't talk about environment, but you also talk about something where there are social imbalances or economic imbalances. And समाज का सुचारू रूप से चलते रहना और उसके अंदर प्रेम संभाव बना रहना, उसे हम सस्टेनेबल कहेंगे, राइट? क्योंकि अगर कोई चीज आज अच्छी है और कल गलत हो जाए तो उसे सस्टेनेबल नहीं कहा जाएगा। तो आज दिवाली के लिए हम सब एक दूसरे को शुभ दीपावली बोले और कल हम एक दूसरे के प्रति वैर भाव रखें, तो वो सस्टेनेबल भाव नहीं है। तो हमें सस्टेनेबल की तरफ इस तरीके से बढ़ना है जो कि सामंजस्य बना रहे, समता बना रहे, जिसके द्वारा। फिर एक वर्ड कई प्रोडक्ट्स पे लिखा आता है, इट्स बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स ये अपने आप में तो नाश नहीं होगा, but by the action of bacteria or fungi or some kind of an external force, it will get back and it will decompose itself into environment. A biodegradable product is good because at least we will get back the original product or original form from it. A plastic is not biodegradable. उसको आप धरती में अगर डालकर रखोगे और सोचोगे एक साल बाद वो बॉटल मिट्टी बन जाए, तो बॉटल मिट्टी नहीं बनती है। एक साल बाद आप वापस से खुदाई करोगे तो बॉटल वैसी की वैसी दिखेगी, थोड़ी सी गंदी हो जाएगी, थोड़ी सी इधर उधर से कुतर जाएगी, बट बॉटल रहेगी। तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सो वी आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर बायोडिग्रेडेबल, जो कि मतलब नेचर के अंदर अपने आप दे गेट बैक टू द फॉर्म दैट दे केम फ्रॉम। Then there are products that are considered compostable. Compostable भी यूज होने लगा है, और हम लोग याद कर देखते हैं तो आजकल पेपर प्लेट्स, spoons, forks, they are using the word compostable. Compostable means if they are applied pressure, या अगर आप उसको धरती के अंदर मिलाओगे तो वो क्षीण होकर मिट्टी के अंदर खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। It will convert into a fertilizer. अपने पुराने जमाने के अंदर माने कई बार हम लोग सब्जियां के छिलके काटते थे और ये करते थे, उनको हम पौधों में डालकर आ जाते थे, क्योंकि धीरे धीरे पौधों में वो खाद बनकर वापस मिट्टी में मिलकर पेड़ों को सहायता करते थे। उसे हम कंपोस्टेबल बोलते हैं। अगर आप पेपर लेंगे, बहुत जाड़ा न्यूज़पेपर होगा, उसको अगर आप पानी में डालते हैं, पेड़ों में डालते हैं, वो कई दिनों तक डिग्रेड नहीं होता है, कंपोस्ट नहीं होता है, बट 3-4-6 महीने के अंदर वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। So it can take time or it can immediately convert into compost. Those are called compostable materials. And फिर last जो हम बोलते हैं वो हम बोल रहे हैं recyclable, means आप एक पानी की प्लास्टिक की बोतल को यूज कर रहे हैं तो you can take it and put it in a separate bin where it is picked up by people who have used those bottles. They sanitize it, they clean it, they may melt the plastic and convert into another form, aluminum, glass, or anything like that, and that is being recycled. So it is a product that can be used again and again, but it is not biodegradable, it is not eco-friendly, it is not compostable, it is not vegan. So there are different qualities. The challenge we have is, what is a product that has all of this? Right? That is vegan, that is eco-friendly, that is sustainable, that is compostable, that is natural, that is recyclable. And I also use the word biodegradable. And then there is a word that has now also started showing up, organic. Means there is no use of pesticides or fertilizers or anything to produce that food product. तो आपके शरीर के अंदर कोई पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स नहीं जा रहे हैं. And it is commonly now proven in the biological world that all these fertilizers and chemicals, pesticides, make it to the plant system, make it into our food, and when we cook that food and eat it, the cooking doesn't destroy that. So we are literally eating those fertilizers and pesticides in our body, which are then causing a lot of cancers and things that are biological science is starting to analyze that. So where are we going wrong? Where we are going wrong, kids, parents, is that we have lost our traditional roots, and our traditional roots talked about the ahimsak way of doing things. And an ahimsak way of doing things embodies all of these things together. It brings everything together. And hence, what we are trying to do through this Pathshala, or what the core team of the NRI Pathshala Samu, all the teachers, what we have done is
When you kids ask us question, okay, is all this ahimsa only related to eating, or is all this ahimsa only related to small things? What we are saying is you need to live an ahimsak life, and here is the way to at least Diwali or Deepavali is one of our biggest festivals. So you will be challenged in your life to always celebrate Deepavali in ahimsak way. And for that, the techniques that are going to be shown in the rest of the program are going to be vegan, are going to be sustainable, are going to be biodegradable, are going to be composite, they are going to be organic, they are going to be recyclable. And another word I used was that they are going to be eco-friendly. All this together is what we say is the ahimsak way of celebrating Diwali. And let's now work with the rest of our Pathshala teachers and their efforts, where they have put different aspects of Deepavali and how to celebrate them in ahimsak way. Because when you do it in ahimsak way, you're encompassing all ways of handling our effort to not harm any living being, protect the environment that we live in, and whatever we take from the environment, we give it back without destroying the true nature of this earth. So सभी पाठशाला टीचर्स को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आप सबकी प्रेरणा से प्रोग्राम साथ में आया है, and I am very happy and proud to be a small contributor to your efforts. And thank you, and Jai Jinendra and Shubh Deepavali to everybody. Thank you, Nitin ji. And now we move to Pushpa Pandya ji auntie. And again, shortly I will tell about her. She is an artist, writer, social activist, and promoter of vegetarianism. She does very good social work, and she has been instrumental in changing people's lives all over the world. So I invite her, and she's going to be presenting through PPTs, and PPTs Pratiksha ji aap play kar dijiye saath mein. जय जिनेंद्र। दीपावली के भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो। Yes, auntie, we can hear you. हाँ, चलने दो ना। हाँ। जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव के अवसर पर NRI टीम के इस शुभ कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। निश्चित ही बहुत अच्छी ऊंची सोच है आपकी कि आपने इको फ्रेंडली, अहिंसक हमारी संस्कृति, संस्कार और परंपराओं को बनाए रखने के लिए इतना सुंदर आयोजन किया है। आप सभी को जितनी स्तुति की जाए वंदन के योग्य हैं। आपका सभी को बहुत बहुत साधुवाद। भारतीय संस्कृति में अल्पना, रंगोली, मारना, ये सब हमारी दैनिक जीवन की क्रियाएं रही हैं और ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये शुभ प्रतीक हैं, मंगलदायी हैं और शुभ शगुन के रूप में कई जगह रोज ही बनाए जाते हैं, और नहीं तो त्योहारों पे तो इनका विशेष महत्व है। ऐसी संस्कृति के बारे में आज हम बात करेंगे, विशेषकर मारना के बारे में। मारना एक प्राचीन कला है जो हमेशा से काफी समय से चली आ रही है, और सिर्फ दिवाली पे तो विशेष आयोजन होता है, पर हमेशा ही इसका किसी न किसी मायने में मारने मंडते ही रहते हैं। जहां भी अगर घर पे जाओ किसी के और सुंदर मारने देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, अरे वाह कितना अच्छा मारना है। तो इस तरह से हमें खुशी देते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं और प्रेरणा देते हैं, उमंग और उत्साह का संचार करते हैं। मारना के लिए दो ही विशेष चीजें का उपयोग होता है। जैसा कि अभी बात हो रही थी अहिंसक संस्कृति और इको फ्रेंडली की, तो ये बहुत महंगी नहीं होती है और बहुत थोड़ी सी खड़ी और गेरू में बहुत सारे मारने मंड जाते हैं। खड़ी और गेरू थोड़े से जैसे डले के रूप में आते हैं, और इसको हम थोड़ी देर गला दें तो 10-15 मिनट में भी थोड़ा सा पानी डालेंगे, गल जाते हैं। फिर हम देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है।
मारने के लिए। तो उस हिसाब से हम इनको, ये देखिए आप गली हुई, पहले आपको डले के रूप में दिखाई, अभी एक ऐसी गली हुई है वो किस बंद कर तरह दे गेट। एक पेस्ट के फॉर्म में हो गई। फिर हम ब्रश से या उंगली से चला के देख लें कि हमारे अगर उसको सूखा लग रहा है तो थोड़ा पानी उस हिसाब से हम इसको डाल सकते हैं। खड़ी और गेरू ये सिर्फ एक साधन ही नहीं है, बल्कि गेरू जो लाल रंग का होता है और खड़ी ये सफेद रंग की है। गेरू नेगेटिव एनर्जी को घर में आने से रोकता है और खड़ी है वो पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो ये बड़े वैज्ञानिक भी हैं, हमारी जो परंपराएं हैं। इसके साथ ही खुशी और सुकून कैसे देती है कि घर के प्रवेश द्वार पर बने होते हैं, ये दीवारों पर मारने मंडे होते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जब दोनों के कॉम्बिनेशन में बनाए हुए होते हैं तो आप देख रहे हैं कुछ डिजाइन यहाँ हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं वो। तो सिर्फ दो ही चीजें इसमें, रेड और व्हाइट का उपयोग किया जाता है। दोनों के साथ बहुत ही सुंदर इसका संयोजन बन के आता है। इसमें ज्यादातर दो चीजों के साथ ही इसमें ज्यामितीय आकार ही ज्यादातर उपयोग में किए जाते हैं। खड़ी पहले इसमें गेरू से आउटलाइन बना ली जाती है और वो जब सूख जाता है, क्योंकि अगर उसके साथ ही बनाएंगे तो वो गेरू के साथ सफेद में मिक्स हो जाएगा, तो वो थोड़ा सूख जाने के बाद, इसका मतलब है कि जब नेगेटिव एनर्जी चली जाए तो उसके बाद हम पॉजिटिव एनर्जी का खड़ी से उपयोग करें। इसमें ज्यादातर ज्यामितीय आकारों को, ज्योमेट्रिकल जो होता है, बच्चे इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह के आकार से बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। हमने यहाँ ज्यादातर डिजाइन बहुत इजी और सिंपल दिए हैं कि बहुत छोटे बच्चे भी इसको बना सकते हैं। फूल पत्ती का तो उपयोग होता है इसमें बनाने में, पर वो भी ज्यादा नहीं। और पशु पक्षी इसमें बिल्कुल जमीन पे नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि वो पाप लगेगा अगर उस पर पैर रखे होंगे तो जमीन पे पशु पक्षी का बनाने का डिजाइन्स नहीं होते हैं, तो ज्यादातर इसलिए इसमें ज्यामितीय आकार रखे जाते हैं। हमारी ये जो परंपराएं हैं, ये घर के शुरुआत से दैनिक जीवनचर्या का अंग है। और तीज त्योहार पर वो विशेष हो जाती है। जब पहले जब कच्चे मिट्टी के घर होते थे तो लीपन के साथ जब भी लीपते थे तब वापस से मांडने मांडे जाते थे। और घट्टी जिससे रोज ताजा आटा बनाते थे, उसको भी मांडना मंडी हुई होती थी। चूल्हे को क्योंकि वो सकरा हो जाता है तो रोज उसको लीपते थे और उस पर मांड के और फिर भोजन बनाया जाता था। तो वहाँ जो चीजें खुशी और उसमें स्वच्छता, सोला और सारी चीजों इसमें इंक्लूड थी। तो इस तरह से हमारी संस्कृति को बनाने के लिए, ये देखिए इसमें घर पे बाहर बैठी महिला घर के बाहर भी साज सज्जा करी कि हमें जाके देख के प्रसन्न हो जाएं। और तो और हमारे यहाँ तो मटकियाँ आती हैं, वो भी मांडने मंडी हुई आती हैं। और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी अगर अलग शहर गांव है तो ज्यादातर सबकी डिजाइन भी अलग अलग होंगे। तो ये भी एक सीखने वाली बात है। आप ये देखिए ऑरेंज कलर का मांडना मंडा हुआ है, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो जब इस तरह के घर सजे हुए होते हैं तो वे अपने आप ही, और बहुत इको फ्रेंडली है, इसमें जो सामान है किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है और कोई इसमें प्रदूषण नहीं हो रहा है। और हम बहुत कम समय में बहुत कम चीजों के साथ भी हमारे घर को डेकोरेटिव सुंदर बना सकते हैं। तो जैसे मांडना में मंडन शब्द का उपयोग हुआ। मंडन का अर्थ है साज सज्जा करना, सुंदरता लाना। और उसके साथ ही ये सब ही हाइजीनिक है और इसका कोई दुष्प्रभाव शरीर पे या परिवार में किसी भी तरह का नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये हम घट्टी चूल्हा से लेके तो रोज ही डिजाइन्स बना के उस पे और फिर तब भोजन बनाते थे। इंदौर की तो दीवारों पर भी बहुत सारे मारने मंडे हुए हैं। और ये मारना यहाँ से लेकर तो बॉम्बे एयरपोर्ट तक भी पहुंच चुका है। और कई जगह तो अब सड़कों पे भी पूरी पूरी सड़कें मारने से सजी हुई हमें देखने को मिलती है। तो ये वो हमारी कला है जो हमारे घर से निकलकर पूरे देश में और विदेशों तक पहुंच रही है। तो बहुत अच्छा आयोजन है कि बच्चे भी इसको बनाएं और इस तरह से किसी भी ओकेजन पे इसको अपने घरों को सजा सकते हैं। बच्चे इस तरह के डेकोरेशन की पार्टी कर सकते हैं। पगलिया का विशेष महत्व है मांडना में।
तो दिवाली पर विशेष तौर पे पगलिये बांटे जाते हैं। पगलिये मतलब लक्ष्मी जी के पैर, धर्म लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और सुख शांति समृद्धि के लिए ये पगलिये बांटे जाते हैं। ये पगलिये 2 पैर के या 4 पैर के बिजनी के रूप में और लड्डू का जोड़ भी बीच में बांटता है। तो इस तरह से पगलिये घर के प्रवेश द्वार पर बांटे जाते हैं। इसमें एक ट्रायंगल होता है, वो दरवाजे की तरफ होता है, और 2 ट्रायंगल जो है वो पैर की बनाने के लिए घर के अंदर की तरफ होते हैं। जो पैर है वो घर के अंदर बनाए जाते हैं कि लक्ष्मी जी, जो भी लक्ष्मी है वो हमारे घर पे अंदर आए। देखिए इसमें बच्चे कितने आसानी से बना सकते हैं कि 2 ट्रायंगल है, एक के ऊपर एक, और उसमें पैर बना दिए। वहाँ 5 अंगूठे का थोड़ा सा बड़ा है और 4 बिंदु छोटे लगा दिए। एक एस के डिजाइन में है तो 2 8 बना के भी बना सकते हैं, एक बड़ा बिंदु छोटा बिंदु से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत इजी फॉर्म में है। फिर ये पगलिये के साथ ही जैसे घर के कोने में त्रिकोण, जिसको सिंगाड़ा बोलते थे, वो बनाया जाता था। तो बहुत इजी है, पहले एक ट्रायंगल बना लिया और उसको फिर 6 इंच की दूरी पे लंबी लाइनें बना के उसमें लंबी लंबी लाइनें डाल दिया, आसपास बिंदु लगाए, फूल बना, और आसपास जो डिजाइन बनी हुई है इसको छनगे बोलते हैं। इसमें जलेबी, इमरती, क्योंकि पहले लोग इसी तरह के डिजाइन बनाते थे। हम पूरे बहुत जो पारंपरिक डिजाइन हैं वो हमने लिए हैं। हम अभी तो कुछ भी फूल पत्ती और कोई भी बहुत सुंदर डिजाइन बना सकते हैं, पर हम अभी यहाँ परंपराओं की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बनाया हुआ है। फिर जब 2 दरवाजे के बीच में जब अब तो डेली होती है, तो डेली के वहाँ ये लंबी एक जो डंडी है इसको साटे का जोड़ बोलते हैं। तो इस तरह से एक साटे का जोड़ बनाया जा सकता है। ये बीच में जो है बहुत सारे स्क्वायर हैं, इसको हटड़ी बोलते हैं। हटड़ी का उत्तर प्रदेश में बहुत चलन है, और हटड़ी में मिठाइयाँ भर के बहन बेटियों के दी जाती है। कई बार सोने और चांदी की हटड़ी भी देते हैं। तो ये हटड़ी इस वजह से 5 या 7 स्क्वायर बनाए, फिर 5 3 2 इस तरह से ये हटड़ी बन जाती है। तो ये बनाने के लिए बच्चों के बहुत ईजी है, और इसमें अंदर भरते भरते इसको बनाया जा सकता है। पगली की मैं बात कर रही थी, तो पगली है सिर्फ दिवाली पे तो इसका विशेष ही महत्व है, और हमारे वर्किंग प्लेस हो, दुकान, ऑफिस, वहां पे भी जाके स्पेशली बांटे जाते हैं। मंदिरों में विशेष करके पगली बांटे जाते हैं इस त्योहार पे। और पगली ये जो घर का इतना महत्व है कि पगली जब बहू घर में आए, अगर पहली बार ही नहीं, शादी के समय भी बनाए जाते हैं, पर अगर बहू मायके से वापस आ रही है तो पगली बनाए जाते थे। बेटी ससुराल से वापस आ रही तो भी, क्योंकि महिला को घर लक्ष्मी को इतना सम्मान दिया जाता था भारतीय संस्कृति में कि उनके आगमन पे पगली बनाए जाते थे, और मारने से इस तरह से उनका स्वागत किया जाता था सुंदरता के लिए और इस विशिष्ट भावनाओं के साथ। बच्चे के जन्म पे भी पगली बनाए जाते हैं, और तो और बल्कि किसी की मृत्यु होने पर भी 12 दिन के बाद जब शोक उठा देते हैं, तो कोरे घालने के बाद बहन बेटियां घर में ये शगुन के पगली बनाती हैं। तो इस तरह से पगलिये भारतीय संस्कृति के जीवन का अभिन्न अंग है, और ये मारने भी सिर्फ दीपावली नहीं बल्कि साल भर ही विशेष आयोजन पे बनाए जाते हैं। रोड तीज पर रोड तीज के गोल मारने बनाए जा सकते हैं, जैसे ये अभी फूल का एक मारना दिख रहा है, इस तरह से गोल मारने आप रोड तीज पर विशेषकर रसोई में बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जा सकते हैं। रंगोली, इसके साथ ही मारना के साथ आप बात करते हैं रंगोली, अल्पना, अपर्णा, ये सभी चौक पूरना। तो पूरे हिंदुस्तान में, कहीं पंजाब में चौक पूरने का सिस्टम है, बिहार में अपर्णा का, बंगाल में भी अपर्णा बानी जाती है, और कर्नाटक में इस तरह की अल्पना, ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये इस तरह के कर्नाटक में बने जाते हैं। कर्नाटक में फूलों की डिजाइन भी बहुत बनाए जाते हैं, और इसके साथ जो सूखी पत्तियां हैं उससे भी हम बच्चे वहाँ पे आप बना सकते हैं। वहाँ बहुत कलरफुल फूल और पत्तियां आती है, उन पत्तियों को हम इकट्ठा करके जो सूखी पत्तियां हैं उसको वैसे का वैसे ही, और कई बार जो टेसू के फूल होते हैं उसको भिगो कर भी रंग बनाए जाते हैं। तो उससे उन रंगों से भी, और जैसा कि अभी आपके यहाँ बताएंगे कि चावल के पाउडर से, चावल का पाउडर उसको डाई करके, अभी शेफाली जी बताएंगे कई
खाने वाली चीजों से कि हम उसका रीयूज भी कर सकते हैं। और जीव दया की बात है कि इतना था कि जो आटे और चावल से बनाई जाती है अल्पना बाहर, उसका है कि जो छोटे जीव जंतु हैं, कीटाणु है, चींटियां हैं, वो आकर वहां पे खा भी सकती हैं, और अगर वहां वो रहेंगी तो घर के अंदर भी नहीं आएंगी और वो बाहर अपना भोजन भी प्राप्त कर सकती है। तो इसमें जीव दया की बातें भी हैं। तो इस तरह हमारी जो संस्कृति है वो अहिंसक संस्कृति रही है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो। पर और ये सब रंगोली और अपर्णा, अल्पना जो है, ये रोज बांटे जाते हैं घरों के बाहर। मैं अभी बैंगलोर में हूँ तो यहाँ देखती हूँ कि रोज ही घरों के बाहर अलग अलग डिजाइन्स वहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे फूलों के साथ ही सूखी पत्तियों का, तो ये जो इसमें चावल के आटे से, सादे आटे से भी, चावल के आटे को सूखे से भी बनाया जाता है। चावल को का आटा जो है उसको थोड़ा पानी डाल के पेस्ट की तरह बनाकर उससे भी बनाए जाते हैं। उसी चावल के आटे को डाई करके हम जो खाने वाले कलर हैं या अभी जो शेफाली जी बताएंगी उस तरह से बनाए जा सकते हैं। इसका रीयूज किया जा सकता है। वो पक्षियों को डाले जा सकते हैं, उसके अनाज या कुछ बना के हम गाय को डाल सकते हैं, और हम खुद भी उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमने चौकी पे या अच्छी स्वच्छ जगह पे बनाया है तो उसका हम रीयूज करके डोसे और किसी तरह की चीजों में इस तरह से भी हम बना के इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम रीयूज भी करेंगे और ये इसका वेस्टेज नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट प्लीज। तो इस तरह से हम ये हमारी जो परंपराएं हैं इनको बनाए रखें। और रंगोली में भी बहुत अलग अलग तरह के रंग लगाए जाते हैं। ये महाराष्ट्र की विशेष होती है। वहाँ पे भी रोज बनाने का प्रचलन है। बिंदु से भी बनाई जाती है, तो एक रंग से भी बनाई जाती है और वो बहुत इजी फॉर्म होता है। कलर्स के लिए आजकल जो कलर आते हैं, हम ज्यादातर लोग रेडीमेड चीजों का उपयोग करने लगे हैं, तो उसमें केमिकल्स का उपयोग होता है, तो उससे बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। तो हम इस तरह उनको नहीं यूज करके घर में किस तरह से इको फ्रेंडली और जो घर के सामान से और उसका रीयूज भी कर सकें, ऐसी चीजों से इस तरह के रंगोली हम चौकी पे या किसी प्लास्टिक में प्लाईवुड की शीट हो या किसी पे बना के उसका हम रीयूज कर सकते हैं। बर्तन में कोई बड़ी थाली है उस पर भी बना के लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे ट्रेडिशन को इको फ्रेंडली, अहिंसक बना के और इन संस्कृति को बनाए रखें। निश्चित ही आपका जो ये प्रयास है NRI टीम का, वो आपका जो प्रयास है निश्चित ही एक अहिंसा का परचम फहराएगा। और इसको छोटा मत समझिए, बहुत अच्छा सोच है और आपने जो कार्य किया है बहुत ही वंदनीय, स्तुतनीय है कि इस तरह के आप कार्यक्रम करते रहें। और मैं चाहूंगी कि सब बच्चे और जो लोग देख रहे हैं इसका उपयोग करें, जिससे हम अपनी संस्कृति, संस्कार और परंपराओं को बनाए रख सकें। तो इस साल दिवाली पर प्लास्टिक का उपयोग नहीं करके इस तरह के मारने बनाइए। जय श्री हिंद, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन आंटी, बहुत आपने सबके चक्षु खोल दिए हैं। सो आई होप किड्स you really liked it. We made PPT in English especially for you, so you must have understood what auntie was trying to convey. So now we have prepared a wonderful video for you to see how to start making these marnas from the scratch, from the very beginning. So this will be a project for you for this Diwali time, and you will be submitting in your Google Classrooms as well. Okay, so we'll be posting that as well in your Google Classrooms. So let's start that video and have fun. Jai Jinendra everyone. So today we are going to draw a basic traditional rangoli called marna or pagliya, which we draw on almost every special occasion. For this we are going to use two basic things. One is called chuna, which is a white powder, and I have mixed it with water and made a paste of it. And another is called hirmich, or another name is called geru powder. Again, it comes in a powder form, and I have added water to it and I have mixed it into a paste form. So I am going to use these two for making the basic pagliya design, which is very simple and everyone can do it. So we start by making
a triangle, then in the center just a pattern like this, and 2 more triangles, smaller ones. Once it dries up, it is going to bring more color, so don't worry if it's not showing you very well right now. So this is a very simple drawing, and now I'm going to use Hirmich or Gerua, whatever you can call it. I'm going to draw another triangle inside this. Now just basic design, you can fill it up with whatever you want, however design you want to make it. There's no mandatory pattern to it. It's just the basic triangle that I drew is what is mostly drawn. And for this, maybe inside I'll just draw lines. Be creative. Whatever you want to do, you can do it in this design. There's no hard and fast rule as to what you need to do. Now I'm just going to draw 3 beautiful petals on all the side. Paglias are mostly drawn at the entrance to the kitchen or entrance to the house. It is basically very traditional and considered very auspicious. Now I'm going to make 3 lines around it. Just a zigzag spirally line on both ends. One important thing that we need to draw is the feet of our Moksha Lakshmi. So this is very simple. Just a normal S you can draw, and then using, now I'm going to use this and make the fingers showing the feet of Moksha Lakshmi entering our house. So this is a basic design. You can decorate it more if you want, but this is the most basic and simple one. So you can do basically any add-ons if you want to. I'm just making a small flower, and all these petals I'm just going to put a dot inside to make it more attractive. This is how the final thing will look like. I hope you enjoyed this. Thank you, Jai Jinendra. So Jai Jinendra kids, I hope all of you really liked it. And you know, this product is available. This product is available in Walmart. You have to type white khadi mitti, and it is available. It will come, they will ship it to you. And it is on Amazon. You can find geru mitti also. So these products are really available. And so there is no worries. You can really make this beautiful designs at your home in Diwali time and enjoy and bring so much of positivity in your house by using white clay mitti, white khadi mitti, and then using geru mitti. You can stop all negativities. And many places you use people use chuna, but that is also a natural product. If geru is not available, you can use it. But geru has a special property of stopping negative, of bringing positivity. So we should definitely try to, khadi, we should try to use khadi instead of chuna as far as possible. Okay, so I hope you are going to have very good time this Diwali. I will be busy creating all this beautiful stuff. And here is my friend Surilji. Oh, really, Surilji, I wanted to hear from you. How are you finding the program so far? Jai Jinendra Sefali ji, and happy Diwali to you and happy Diwali to all. It was, you know, that this amazing. ये आपने जो वीडियो बनाया था ना, ये amazing था. When I was a kid like you guys, I was used to do, but अब
अमेरिका में आ गए तो कहाँ कहाँ मिलेगा, पर थैंक्स सैफ अली जी, आपने बताया कि अब ये अमेजोन पे भी मिलता है। आई हैव अ क्वेश्चन, राइट? वॉलमार्ट और अमेजोन, रिमेम्बर वॉलमार्ट पे खड़ी मिट्टी मिल रही है, खड़िया मिल रहा है, और अमेजोन पे लाल ये गेरू मिल रहा है। दोनों में से, दोनों जगहों से बुलाना पड़ेगा। अरे दोनों जगह से ले लेंगे, मिल रहा है तो सबसे अच्छी बात है, ढूंढ लेंगे। नॉट एन इश्यू। हाँ, पर ये एक चीज है यार कि हम लोग इतनी मेहनत क्यों करें? रेडीमेड मिल रहा है तो व्हाई डोंट यू बाय अ रेडीमेड रंगोली एंड स्टिक इट आउट? ओके, इट इज एन इजी Yes, ऑप्शन। yes, yes, I understand. It is totally easy. But do you know, जो रेडीमेड मिल रहा है उसमें जो ग्लू लगा हुआ है, the glue that they're using, do you know what material it is made up of? And the whole thing जिसपे वो पेंटिंग बनकर आती है, do you know what material is that? Do you have any idea, Suril ji? You check out all vegan stuff, right? कभी नहीं सोचा, I never thought about it, but I think it would be, you know, that means it everybody is using, so I hope कि वो सही होगा। नहीं, so see, वही बात है ना कि हमें लगता है कि जो whatever is going on is okay and we can do it, but no, जो उसमें glue है that has animal bones in it, तो अब बताओ वो कितनी negative energy लाएगा। And दूसरी बात ये है कि it is made up of plastic, so again it is not at all eco-friendly, and many times it is made up of toxic materials, so definitely we should abstain from using it. And not only that, when we do something with our own hands, the amount of happiness that we get, can we really, don't you feel so happy? We cannot even talk, we just feel like accomplished, we did something great. So why not kids do this, right? Rather than just bringing something ready-made and sticking on the floor. I hope I have been able to convey properly. What do you think, Suril ji? Yes, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था भाई। हाँ सही है, जो हाथों में करने से वो मजा आता है ना, वो तो डिफरेंट ही है। And I didn't even thought about what kind of the material they used it, right, while the preparing. We definitely check it out whether it's eco-friendly, biodegradable. नितिन जी ने जो सब कुछ बताया ना, वो पूरे पॉइंट देखने चाहिए। आखिर we are Jain, we should have to celebrate with the Jainism way. Yes, yes. और अब तो मुझे भी गेरू और खड़ी ढूंढ के लाना पड़ेगा और ये बनाना सीखना पड़ेगा। Very nice, very nice. पुष्पा जी। So I think let's move to next one. But before moving to next one, I would really like to hear from Meenal ji. So Meenal ji, how are you finding the program so far? Oh my God, this is so awesome. And after seeing that presentation and the video, I'm super excited. Like what are we going to learn next? What do we have in store next? Oh, so next we have food colors video. We have very nice video, food colors. Are you excited to see it? Oh my God, yes, but it must be so tough making food colors at home. Oh no, it is so easy that I can't tell you. While cooking your lunch or dinner, you can just make them. It's that easy. So let's see the video and then we'll talk further. Of course. Okay. Jai Jinendra. In this video, we are going to learn how to make food colors at home with the veggies and fruits that we have. It is important to make our own food colors because the store-bought food colors are either made using chemicals or many times they have animal ingredients also in them. So we have to avoid both the things. So today we are just going to be discussing the food colors using spinach. I've broken the stem and just the leaves I'm taking, and this is red cabbage, purple cabbage. We are going to be using this, and then turmeric. Using these 3 ingredients, we'll be making 5 colors. You can make as many colors, as many styles of food colors you want using different fruits and veggies. You can use blueberries, mango, pineapple, and other vegetables also that have colors in them. And we'll be discussing the technique and using that you can make any number of colors. So now we are going to pour water for these 3 colors in 3 pans. Little water.
I'm putting spinach in this one. Here goes my cabbage. And here goes my turmeric powder. We'll boil it till it really gets wilt. Whisk it a little bit, let it boil. All the three things are almost ready. Let's off the gas and let it cool down. So now, first of all, our yellow color is ready. Need not to do anything. It's all yellow. So just pour it. Now we'll be blending. This is all cooled down. We are going to be blending. Spinach. Now just see our green color. It has come out so beautiful. And now I'm going to be creating purple color. I'm blending my cabbage. Next color is ready. We are filtering it and we'll be producing 3 different colors out of it. Excited everyone? Shortly we'll show you how to make 3 different colors with this purple color. So here are our 5 colors. 3 colors that we made, and now magic is going to happen. This is baking soda, and I'm going to pour little baking soda in this. And you will see a magic happening. It is going to be turning into blue. Nimbu ka juice in this. Lemon juice. And a nice pink color has come. Dark pink color. So now we have 5 beautiful colors. Wow, Shefali ji, that looks so amazing. But here's the thing, I work full time, and I'm sure many others work full time too. Like, I hardly have any time to cook dinner, and all this seems like additional work on top of it. No, it looks like very big job, but you see how in such few minutes I was able to create this. And what you can plan is like that day you cook that vegetable only that you are boiling and taking color out of it. You can use it in the soup or something. It is already crushed. So make a delicious mixed veggie soup, or you can just cook that vegetable and you have just poured whatever the liquid is there. That is your color. So you have not really added any additional work to your lifestyle. Just only think that you gave a thought of taking out the color from it. So it's not really increasing your work. It is very few seconds you can say that additionally adding to something, and you have your dinner also getting ready at the same time. And not only this, with these colors you can put it in the whatever like let's say you are making uttapam or something, so just add those colors into it and have that for dinner. The kids are going to love it, right? That's good idea. Yeah, I mean, I didn't know using all these things, even in the small portion, in the long run can cause so many problems, like if it can cause all these diseases. I had absolutely no idea. And do you want to know what kind of diseases are Yes, caused? absolutely. What type? Yes, they have chemicals like benzene and so many others, just to mention one. And this is carcinogenic in nature. It causes cancer, it causes ADHD, it causes allergies, asthma, hives. I mean, name things. I mean, there are so many things. Anything synthetic, anything artificial that goes into our system, we really do not know in the long run how is it going to react with the body. And we are consuming it not very in large quantities and maybe not that frequently, but we are consuming it for such a long period of time. Then those diseases start building up. We never know when it's going to come up and show some bad signs.
So it is always better that we avoid it. Why would we want to eat something or do something or use something which is cancerous? I mean, why would we do that? We will definitely not do it. Rather, we not use it rather than trying to make anything beautiful, right? So, but yeah, we want to live our life with full enthusiasm and we need colors and everything. Then why not follow these small tips, right? Absolutely. I mean, this was eye-opening, and I just cannot believe, like, थोड़े से अपने आलस के लिए, time बचाने के लिए, we invite so many diseases into our life. And thank you for showing us. Yes. So सही बात है, मतलब महावीर स्वामी ने हमें यत्न के साथ जीना सिखलाया है. सबसे बड़ी बात ही है कि हमें यत्न के साथ जीना है. तो अगर हम थोड़े से एफर्ट्स डालेंगे, बिना यत्न कैसे करेंगे? मतलब we have to really live with full efforts. We have to put little efforts in everything that we are doing, and we need to be a little careful in whatever we are doing. So by doing small steps, taking small steps, I mean, we'll be really practicing Jainism in our day-to-day life. So why not do it, right? Absolutely. Thank you. So what's next? What are we learning next? So next, let me call Manuji before we start with something next. Let me hear what she has to say. Yeah. So Manuji, Jai Jinendra, welcome to our show. Yes. How are you? What are you contemplating so far? Oh, Shefali ji, cannot tell you. I'm just truly loving it. You know, I'm learning so many new things today, which I never knew earlier. But I'm just wondering, we only need few drops of color. So what are we going to do with rest of the color, right? Right. So now with the rest of the colors, we'll be making rangoli colors, glitters. Just see. Oh, make rangoli colors? Why? What's the need to make rangoli colors at home? We can easily get them in the stores nowadays, right? Yeah. Yes, that's correct. But do you know they can be using chemical dyes, and moreover, they have structured polymers like acid, mica, and glass powder. Just imagine acid coming to our home, and from our home going into grounds and then into the stomach of those poor animals and bacteria and whatever there are in the nature. And then eventually they get sick or they die, and this disease is spread, and eventually they come back to us. So do you really think that it is worth buying those kind of easy to use colors? At least if we are buying from outside, then we should look for organic colors. But again, some chemicals are always added. We really do not know what is going on. So why not we just make some things at home, which is so easy to make? So let's start with the next video. I think so you will like it. So Jai Jinendra, so here we are in the process of producing rangoli colors using rice flour, and we'll be making beautiful rangoli shortly with all these colors. So now they all are air drying here, and I'm going to show you how I made it. So this is the green color I'm preparing. Mix it, mix it, mix it. And the beauty of these colors are, just like regular colors, when we mix two colors and a third different color comes up, similarly you can try a lot of combinations with these colors. But you also have to keep in mind that a chemistry is also going along with it. But you can try, and beautiful colors and shades will come up by mixing different colors. Now here, this color is slightly different from that one. This is the one I used red kale in it. So the idea is same. We take a little bit of water and put veggies or fruits, whatever thing that we want color from, and let it boil, and then we let it cool it down, then blend it, and then filter it. So the process is quite simple, and we get beautiful homemade colors. This one color can be used for making sweets, which is good for our health. Then we can make it using gift items like the art and craft products that we need.
Then we can make rangoli out of it that we are already making right now. So the stitch of colors made in less than 10 minutes can give so much of color to our whatever we are doing, right? Our sweets, our rangoli making, we'll be making bandarwal, and that will be using sea salt for glitters. So all will be created out of these colors. So thank you, Jai Jinendra. Oh, wow. Now I truly understand why we should make all these products at home. This was really amazing, really amazing. I will definitely do all of these for my Diwali and hope everyone gonna do it and celebrate Diwali in an ahimsak way. This was just super. Yes, thank you so much. And not only this, we can get kids engaged in creating these products also. Like we can have a play date in which the kids can come, and then we have they are making colors with us, and then they are making the colors. They are putting the colors in the rice floor and having good party and creating glitters also. Shortly we'll be seeing glitters very soon. So this is something can be a part of their play dates. I mean, these things can be created, not only just the final artwork, but in the process, whatever the steps are there to make it interesting, we can really create some good parties around it and play dates for the kids. Their birthday parties can be created. And so many creative ideas can be built up in making these products also, so that we don't feel like that we are doing something extra or we don't have time for, and all those things, right? They will learn so many things, new things in this process, and it will be super, super fun. Great. Thank you, Shefali ji, for teaching all these. I think now we need to hear from Rohini ji. Let me see what's going on in Rohini ji's mind. Yes. Sure. Jai Jinendra, Shefali Welcome you ji. here. Yes. So Wow, this program is amazing and I'm loving it. And what an eye opener for all of us, right? Like when we never knew that while our celebration, we were doing so many harmful things which are not good for environment and living beings around us. But this program is truly an eye opener. Thank you, Shefali ji, for sharing all these beautiful videos with us. But you just mentioned about glitters. What about it? I mean, who don't like glitters, right? I mean, everybody likes it. It makes all our arts projects so beautiful, and then it's part of every celebration and every ceremony nowadays. What about it? Can you please tell us more about glitters? I'm excited to know about glitters. My daughter just love glitters. So actually, glitters are very, very harmful for. They are made up of their short plastic, very tiny plastic pieces, and they go into landfill. And then just imagine they are not biodegradable, they are not compostable, and they stay there, and then they go in the stomach of the beings, and then just they die. Just how much biodiversity is affected. And when biodiversity gets affected, then definitely that effects that we are seeing comes on us. Recently, the COVID is the outcome of all these kind of things that we are doing with the nature. So this is what happens. So it is really important that we make sure what we are using. It is जैसे कहा जाता है कि like शिकार खेलने में जो दोष लगता है ना, when we are doing शिकार, when we are really hunting and killing an animal. So the type of sinful karmas we gather by doing that activity, same kind of karmas are gathered when we use products made out of those dead animals in our daily life, and we don't even realize it because वो इतना intermingle हो गया हमारी life से. It has got so much into our lives that we don't even bother to know कि इसमें ये सब चीजें हैं, and we don't even want to care about what to like. We have just got used to it. That this is the festival, this is what we have to do today. I have to do these things. This comes from this store. I'll just buy and just have it. So, but we have to be little thoughtful, and little efforts can really change the world, right? Yeah, very well said. I mean, we have become so selfish. Like we are just focusing on celebrating our festival, but it's so sad we keep harming environment and living being and other animals in our celebration. Instead, we should just focus on all the eco-friendly ways of celebrating festivals, and we should really focus on that. I really looking forward to you sharing
eco-friendly glitter video for me, and I hope it's not very hard, so we can try it at home and use it. Yes, these are very, very easy to do things. Yes. थोड़ा सा कर्मठ हम बन जाएंगे and थोड़े से aware हो जाएंगे, everything will become so beautiful again. Yeah. चलिए देखते हैं next video. Using the same 5 colors, we are going to color sea salt. I have started the oven, which is at 350 degree Fahrenheit, and in that we are going to bake it for 10 minutes. When we bake sea salt with colored colors for 10 minutes, it starts glittering, so it becomes a very good glitter for us. Let me make purple. I'll be adding yellow. So just pour some yellow on it, and then we have to put this in the baking dish, and a beautiful glitters will come out of it. So here the 10 minutes are over and our glitters are coming out. See how beautiful they have come out. So now we'll just take it out. We'll scrap it from the surface like this. This is a nice glitter. Purpley glitter ready. And here is our yellow glitter ready. So here are our glitters made out of sea salt. We can make lots and lots of art and craft projects using these. We can make bandarwal for Diwali. We can put it on like pistachio cover and make beautiful beads out of it. And then any lentils that we are using, that can be covered using the glue that we had made at home. And then on that, cover it with this sea salt, and it will look like pearls, like beautiful shining pearls. So we'll be doing that all in next sessions. So for that, till then, Jai So Rohini ji, I hope you are going to try this. Rohini ji, you're muted. You're muted. आप muted हो. Rohini ji, you're muted. Can you hear me now? Yes, yes. Sorry. Yeah, it's a really nice video. I really like it, and I'm really looking forward to make it at home. I hope I can make maybe bandarwal or use these glitters. And I already started searching for geru and other stuff online, and it's right time, like just right before Diwali. Hope I get everything and I can start using it. Thank you so much, Shefali ji, for sharing all these wonderful videos with us. Yes, thank you. And these are slightly matte finished, so they really look very sophisticated. In future videos, in future programs, we'll show glossy ones also. So hopefully people start getting into habit of using these things. Looking forward to it. Really, really nice. Very nice. Thank you. Before we proceed further, thank you, Rohini ji. Before we proceed further, I really would like to hear what Diksha ji is thinking. Like, I love glitters, but I just want to know, that was a nice tip of the matte glitters, but in the market we get so many glitters saying they are biodegradable, they are organic, they are eco-friendly. So should we buy them or not? Very, very nice question, Diksha ji. Yes, we get all of these things in the market. The only thing we have to remember is this eco-friendly, biodegradable are very wide terms. Many times, some of the things they say as biodegradable are not really naturally biodegrading themselves. They need industrial setup. They need proper temperatures. They need proper bacteria to do it. Now, in the natural setting, is it really practical for anybody to pick up those small, tiny things from the soil all over the earth and then put it into the system and then the bacteria work on it? So they're really not. So that is the biggest problem. When we even try to see this vegan, this kind of biodegradable products and
eco-friendly products, this is the major problem that happens. So we really need to see deeply as to what do they really mean, to what extent they are saying that this is going to be. It may look little tough sometimes, but if we do a little bit of research, we'll be able to do it. And that's why we should try to do as much as we can do by ourselves, so that we know that we are really doing the right thing. And it doesn't cost anything, and just little practice at home will change the life so much. So Didi, then what we need to do? Like, what should we look out for? Yeah, I have read about bioglitters. Like, a lot of companies are working on this. So we should definitely try to promote those kind of businesses that we are 100% positive about, that they are really bringing goodness on the earth. And we should use their products also, because then only those businesses will grow. So bioglitters is one of the things that has come into my knowledge, and they do the complete testing for it in the running water, and they see whether it is really dissolving or not. It is 100% plastic free, and it is biodegradable in the natural form. So maybe we can try. So the companies all over the world are really trying. They have not come to that point that we can just go and pick it up, because still there are many of them are being able to do up to 90%. Some of them are able to do up to 70%, but still they have some impurities remaining in them. So hopefully, eventually, when the world is going into the right direction, we'll have more of these kind of products. And moreover, as gems, if we start making the things ourselves, maybe we are going to create the markets for these things, right? And we'll be able to sell these kind of products to the world. So why not we start doing it and move in those directions? Oh, wow. That was a nice tip. I will definitely look for bioglitters for all my makeup needs, decoration, and food items as well. Thank you so much. Yes. So bioglitters are coming for all these makeups and all those things. So yeah, you can try that. But please do analyze a little bit more into it, that it is really what they're saying. It is really made up of eucalyptus tree and all those things. Like, you have to look into little details, because these are still growing companies. They are still investing a lot of their efforts into it. So it has not come to a point where it is a perfect product available in many of the sectors. But bioglitters, I think right now, are coming up with really good products. That's what the latest news that I think I have. Very nice, Diksha ji. Yeah, so I hope you will also make some of these glitters that we showed and try it out. Definitely. So thank you so much. And Diksha ji is the one who has created these beautiful backgrounds for us. So thank you so much, Diksha ji. Thank you for joining us. So after Diksha ji, now let me talk to Ankita ji. I want to really hear from her. She always comes up with so many questions and ideas. Ankita ji, welcome. Jai Jinendra. Jai Jinendra, everybody. You have given a wonderful knowledge of celebrating our Ahimsak Diwali, from the decoration and everything. And you were talking about the glitter, but how we gonna stick with this? Is there any glue also which we can go for? Do we have any vegan glue also in the market? Do you have any such knowledge? We do get vegan glues, but the only problem is they are not really biodegradable. So they are eco-friendly to certain extent, up to 90%, but 10% they are not. So we have a very good recipe. In home, we can do it in 2 minutes. 2 minutes, really? 2-3 minutes, we can create our glue. So why not we look at homemade glue? Yes. Yeah. Is it Yes, really? yes. It's interesting. Yes. Let's see it. How we Yes. can make it. Yes, our all grandmas and all used to do this. Jai Jinendra. Today we are making non-toxic, environmental friendly glue. I've taken 1.5 cups of water. I'm adding 1 cup of wheat flour. And now I'm going to whisk it to make it so that the lumps are gone and it's one smooth batter. Now I'm adding 1/3 cup of sugar. Whisk it again so that it becomes a smooth batter.
I'm going to add 1 teaspoon of lemon juice so that we can preserve it for 6 months in refrigerator. Whisk it. Heat it on the medium gas for 2 to 3 minutes till it becomes like a paste. I think you're muted. You're muted. Yeah, it's amazing. Like, I will definitely try it. And also, like, I always get tempted by the paint colorful, ready to use, like wax diyas. What is your opinion about that? Oh no, we cannot use them. We think that it is very easy, just bring it at home and lit it up. But see, they have animal ingredients. They are made up of plastics. So definitely not something that we should look for. So here is a beautiful PPT. So you see all the stick ones that we have ticked it are all clay diyas, and they also come so beautiful. Like, see, so much of hand shilpi is done in that. Why not promote that industry? Why not promote those artisans? And this is all clay. So this is jo mitti ke bante hai na, that is only the best way to go for. We don't really have any shortcuts in this. And this is our traditional way, and this is the best. The other ones have plastics in them, animal ingredients in them, really not good for nature. And then moreover, they use acrylic colors in painting those diyas. The painted diyas look nice, but then they all have acrylic colors. Now, acrylic colors is totally plastic based, totally plastic based, and it is harming environment very badly. So we should totally abstain from using acrylic colors, because I know acrylic is very easy to use. It can be applied on any product, anything, multi-surface, very easy to use. Everything is there, but then we also have to be thoughtful for the nature. Just use in the natural form, or if you want to decorate, you can decorate it with all of our eco-friendly things and the items that we have shown. You can decorate it with that, but don't use all these kind of stuffs that we are seeing here, which has been crossed. It's not really worth it. Okay, and what is your opinion about the crayon and pencil colors? Crayons has meat tallow in it, so crayons cannot be used. Pencil colors also have meat tallow in it. We do get vegan colors. We have vegan colors available. Some companies are selling it, but you have to look into the details again. So definitely, definitely not. And moreover, the brushes, you know, they say the brushes are eco-friendly and biodegradable. But do you think they are vegan? No, they're not vegan. They are made up of animal brush, like hair, which the animal has been killed for it. So we have to also look for, when we are seeing eco-friendly and biodegradable and things like that, sometimes they are, but they're not even vegan. So how does our ahimsa come into role? Not at all. So first thing that we have to see is that the things should be vegan in nature. Definitely it should not vegetarian or vegan in nature. Otherwise, it makes no sense to even proceed further to buy or investigate. So that's what the problem with these art supplies. So then what kind of color should we use for the making bandarwal? Bandarwal, we can, in this rice paste, that like in the initial presentation of Pushpa Pandya auntie, if you remember, she was talking about so many types of rice paste that you can make, and you can add all natural ingredients in them. Actually, we need a complete fun, full session for showing all painting colors and things like that. We'll come up if we will continue to come up with these kind of shows, and we'll go into more details. But to answer shortly about what you have asked is that we have rice paste, then we have rangoli, like rice flour, in that you make the colors. And there are some watercolors also, which are coming in the market, which are totally eco-friendly and vegan in nature. And then there are various dyes made up of natural leaves and things like that, so that you can be used. Then there are some oil-based colors also nowadays that are coming up. So we should use those colors if we have to use, rather than these. Yeah, not at all acrylic. Yeah, it seems a little hard task, but like if we being practiced in that, we definitely will be saving so many animals and so many lives. I think we should definitely do more of these kind of workshops and definitely explore our ancient art techniques. Yes, our ancients have given us so many wonderful treasures, and somehow with this growth of
economy and the like modern culture coming up, we tend to lose that. And we have to really revive that back and start embracing it and be proud of the culture we come from. Not think like that, oh, we will not look modern if we are doing these things at home. No, there's nothing like modernism doesn't say that we cannot be eco-friendly, we cannot be biodegradable. Rather, now all Americans are coming up with this understanding of eco-friendliness and biodegradable nature of things and everything. And we have been, like, as Jainism, as Jain people, we have been practicing this since ages, since our Sanskriti has survived because of our eco-friendly nature, because of our ahimsak nature. So we should be really proud of our culture, and we should continue to serve the earth in that manner. हमारा धर्म तो जियो और जीने दो कहता है. परस्परोपग्रह जीवानाम is our basic principle, which is symbiosis. Now the science talks about symbiotic nature, so that all living beings are independent on each other. So whenever we are using anything which is not eco-friendly, we are not really, we're at that time, for a short moment of time, we might feel pleasuresome that we just finished the work, we are done. Who has the time to think of all these things? And we don't have that much of time to think over all these things. But then just imagine the problems that occur because of this kind of attitude. If anybody's life is hurt, then the biodiversity gets affected. Parasparobgraha jivana, the interdependency of the animals on the beings on each other gets affected. And definitely we are seeing the outcomes of all those things, those COVID and all kind of natural calamities and all those kind of things are happening because of this very nature of ours, that we don't want to pay attention to those minute details and just we want to live fast life, that things should come up very fast to us. But if we just take a pause, do the activities in creating these things, create parties or just take out some time and try to do these activities, it will be so much good for Earth, right? Yeah, right, Shefali ji. Wonderful knowledge like you have given. I will definitely go for all of these. Yeah. Thank you so much, Ankita ji. And now I would like to invite Pratiksha ji. She has made a beautiful beach pataka for us. So seed crackers, and we would like to hear her experiences first, that when she made this ahimsak product, what was she feeling? And from there, we'll see the video, how to make it. That is also very easy to make. Welcome, Pratiksha ji. Yeah. So, Pratiksha ji, please tell us your experiences. Yeah. So, we have been talking about eco-friendly Diwali, so I thought we should not use the crackers this time, firecrackers, and put my little bit of effort in reducing the pollution on the earth. So then I started exploring the options, and then I found that we can make seed bombs or beach pataka. So you can make it with mitti, soil, and the different types of seeds. And when I am making it, and I felt closer to the nature, and it really felt very good. And I went back to my childhood. It's like playing with the mud, and then you're having fun with it. So it was really cool. And then when you make it, you can just gift it to the people. And maybe in the next birthday party, you can have this activity of making seed bombs, and this can be a return gift for the kids, and then they can go home and plant it and get the beautiful flowers. Amazing. Yes. So let's see the video. Jai Jain everyone. Today we are going to make seed bombs or seed firecrackers. So we are going to use some potting mix, or you can use any dirt, and pour it in a box. I am using a shoe box so that it will be eco-friendly, because you already have the shoe box. And then I am using some flower seeds to mix into it. So I got some marigold flowers, seeds, and we are going to just mix it with the dirt. So marigold
seeds are just the petals of the flowers, so you can dry those and use the petals also. So we will mix it, and then we are going to spray some water. I cut the top of this bottle so that we can make the cone shape. We filled this part with the soil, and then when you just take it out, you get your shape, and then you just keep it to dry, and then we will wrap it up with the wrapping paper. Or if you have some old pots, you can make the shape from that. And if you don't have anything, you can use some small cups to use the shapes. So you can fill this up and make the shape with this also. Or if nothing else, you can just make it like the ball. Then after drying, it looks like this. We can make some balls or make in the cone shapes. Now, when you have these dried seed palm or seed crackers, we can pot them. So we'll just fill it with the soil. Take a small container, fill it with the soil, and then put this in the middle. Put some more soil. And water it. And keep watering it every day, and in the cold areas keep it inside, and after 30 days we will get the 30 to 35 days we will get the flowers like this. Isn't it wonderful? Then just burning the firecrackers and we don't get anything back. Here we are getting beautiful flowers. Amazing video, Pratiksha ji. So nice. So we all have to get rid of these firecrackers and have to start making seed crackers and give those as gifts and have parties around that, right? So amazing ideas. So now I'm inviting Namrata ji. She has also implemented our ideas and have created beautiful project for you kids to do it. So let's hear from Namrata ji and what were her feelings when she created it. Jai Jinendra, everyone. A very happy and prosperous Diwali to all. So when Shefali Bhabhi and I were discussing on the various options of making rangoli, which could be eco-friendly, biodegradable, environmentally safe, I especially leaned on this idea of making a rangoli which could be done with dals or lentils that we have easily available at home, are of so many different shapes, colors, and sizes. So it is a very creative way to make a rangoli. And in the video, I've just used dals, but you can explore your creativity by using different spices like whole black pepper, long or cloves, soft methi seeds, or maybe different dry fruits like almonds, cashews, or pistachio shells. So just explore your creativity. Also, I use the homemade glue, which we just saw the video of. So initially I was thinking it will be a troublesome task to add the glue and then do the rangoli, but it was so easy. It just took me like 2 to 3 minutes to make that glue. And while making the project, I felt so good because then I knew in my heart that I was using something which was so environmentally safe and it is not going to harm any other living forms. So yes, that was an added bonus of using homemade glue.
And also I knew this, like once my Rangoli thing is over, I don't need my Rangoli any further. Once the Diwali is over, my whole dal creation all my dals can be taken out in the backyard, and it can become a very good food for all the birds and little animals like squirrels and rabbits, which are always coming in my backyard. So it would become a very good food for them. So that will also ease my mind of not putting those Rangoli colors out there in the open, which can harm the living beings so much. So I would just want to say, overall, my experience of making this Rangoli was very satisfying and very fulfilling. Thank you so much. Jai Jinendra. Amazing, Namrata. Let's see your video now. Yeah. Sure. Jai Jinendra, everyone. Today we are going to make a very interesting Rangoli. Rangoli not with colors, but something very unique and different. So let's start. For this Rangoli, you need a poster board like this, a compass if you have a compass, or you can use circular objects like this small bottle that I'll be using. For a bigger circle, this bowl which is also round, a Sharpie, a pencil, an eraser, and also a ruler for drawing the square. So first of all, we'll use the small circular bottle and make a small circle. Outside, I'll be drawing a bigger circle using this board. Now, using the ruler, I'll be drawing a square outside these two circles. You can make a point if you want it to be perfect. Now, on the middle of each line of the squares, I'll be drawing petal-like figures. This is going to be a freehand drawing, guys. Just imagine to draw petals on all the four sides. Also, on the corner of the square, I'll be drawing another 4 petals. So there will be total 8 petals in all. Now, using this small bottle again, I'm going to draw circles within all the 8 petals. So you can see how I am doing this. So this is how our final project is going to look like. I'm going to decorate it with these different dals or lentils that you can see, like rajma, masoor, rice, tur dal, moong dal, all these dals that we eat daily in our food. And this, what you see, is the homemade glue that I have made using atta and sugar. This is what is being used in this project. Eco-friendly. Take the homemade glue and on the outer circle, just apply a layer of glue. On this circle, I am going to stick our rajma or kidney beans. So apply the glue properly. Now take the rajmas and stick on top of it. Like this. Now in the inner circle again, I am taking our biodegradable home glue, applying it all inside the circle. And on this circle, I am going to stick rice. The small rice that I have, white rice, I am going to put it on this circle. And don't worry if the rice comes out, because we can always remove the excess. But make sure to apply the glue properly. Now take some rice and put it on the circle. And then make sure to tap it properly, press it down so that it actually sticks. And whatever extra is coming out, we can always remove it. So don't worry about it. Now similarly on all these small circles, I'm going to apply glue and put our white rice. So this is how all the 8 circles are finished. I have put rice. Now I am going to remove the excess rice.
Now in the center circle, like the area between the rajma and the rice, again I'm putting some glue, good enough quantity of glue, and then I'll be putting moong dal on top of it. So we'll stick moong dal, the green whole moong dal, in this space. Can you see this? Yeah. So put it all in the middle portion and make sure to press it. Then I've taken the red tur dal and this I'm going to stick in the square portion. So I've applied glue in the whole square section, and I've taken the red masoor dal and spreading it all across, making sure to press it also in between. And now I'll remove of the extras of the dals in a tray or any place you want to. So all the extra will come out, whatever is stuck will be stuck. Now similarly I'm putting the yellow tur dal in the middle petals outside the white circle. But make sure to put good amount of glue, put the dal, press it, and don't worry about the extras because we can always remove it. Similarly, I've taken the brown masoor dal, and that also I'm going to stick in the corner petals. So I've taken brown masoor dal and the green moong dal, and that I have stuck in the. This is how our final product is going to look like. A beautiful homemade dal rangoli. And this is absolutely eco-friendly, biodegradable, vegan, harming not it's not harming our environment in any way, and it looks so beautiful. And this you can use it as a rangoli as well as like a wall hanging. Jai Jinendra. Jai Jinendra, amazing man, Namrata. Big round of applause for you. So you already showed how to implement these techniques and make beautiful things. So with this, हम सभी दर्शकों को वापस से बहुत बहुत शुभ दीपावली की बधाइयां देते हैं। सबका दीपावली खूब खूब मंगलमय हो। आप इन सब टेक्निक्स को अप्लाई करें और उससे एकदम अहिंसक और मांगलिक दीपावली मनाएं, और आपको बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति महसूस होगी अंदर से। खूब अच्छा लगेगा। जब भी हम प्राकृतिक चीजों के साथ शुद्धता से जितना ज्यादा कोई भी काम करते हैं तो हमें बहुत आंतरिक खुशी होती है। तो आप आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आप हमें जरूर से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हम जो भी आपके सुझाव हैं हम उनको सुनने के लिए भी ओपन है। बिल्कुल, you can always reach out to us with your suggestions, your feedbacks, and we will definitely look into them. And so thank you again for watching it, and wish you all a very, very happy Diwali on behalf of our entire NRI team and all the volunteers of Pramanik Samho. And everybody who has, we are from the depth of our heart, we are thankful to all the people who have helped promote this program in any ways, and will be very grateful to those people who will be really implementing these ideas in their day-to-day life, and will let us know that what changes what did they feel like when they did this. Thank you so much. Jai Jinendra. With this we take a leave. Jai Jinendra. शेफाली, कोई बोलना चाहता हो तो बुला ले। सरला सामरिया आंटी हैं क्या? तो जो कोई भी अगर कुछ बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। रिकॉर्ड कर लेते हैं अपन, ये रिकॉर्ड। हैप्पी दिवाली, दिवाली, हैप्पी दिवाली, दिवाली, हैप्पी दिवाली। Very nice. Happy Diwali to all. बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा सभी का। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सबने इतनी मेहनत करी है, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। पर इंडिया में थोड़ा रात ज्यादा हो गई तो थोड़ा लोग सो गए शायद जाके। बाकी बहुत बढ़िया रहा, बहुत सीखने को मिला, और सीख सकते हैं। यूट्यूब पे तो ये रहेगा ही ना शेफाली?
हाँ रहेगा रहेगा, यूट्यूब पे ये रहेगा, तो आप लोग आराम से सब लोग देख सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग्स। और कोई अपनी आइडियाज कुछ शेयर करना चाहता है आज के प्रोग्राम के बारे में, तो जरूर जाइए। इसका पार्ट 2 और बना लेना तुम। शेफाली, बहुत सुंदर कार्यक्रम, नितिन जी ने बहुत अच्छी जानकारियां दी और आपने बहुत अच्छा आयोजन किया। पूरी NRI टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया पुष्पा जी, आपने भी बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा सिखाया, बहुत ही बढ़िया बताया, बहुत ही अच्छा था, बहुत बचपन की याद हम ग्लू बनाते थे आटे का, अब तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो पूरा बचपन आपने याद दिला दिया। और सच में सभी बच्चे सीख गए तो इको फ्रेंडली और इतनी अहिंसक दीपावली मना, और हमेशा इस तरह की चीजों का उपयोग करके हम पूरे लाइफ को हाइजीनिक और अहिंसक बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम इस तरह के और आयोजन करें, और हम आपके साथ हैं, जब भी हमारी जरूरत हो तो हम आपके साथ आ सकते हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आंटी सो मच, आपका पूरा हर जगह मार्गदर्शन रहा, इसीलिए प्रोग्राम इतना अच्छा होता था। नितिन जी ने भी शुरू में बहुत अच्छा समझा दिया था, बहुत ही बढ़िया समझाया था, खूब अच्छे से। चलो अब दिवाली मनाओ सब लोग। शुभ हैप्पी दिवाली सभी को। एक दिन सोनू दिवाली की पूजा भी बता दे। एक दिन दिवाली की पूजा का भी प्रोग्राम बता दो। वो हमारे ग्रुप पर होता है एवरीडे, जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, हम लिंक भेज देंगे। हमारे चैत्यालय में सुबह और शाम दोनों टाइम्स ये सारी रिलीजियस नहीं, दिवाली की पूजा का। हाँ दिवाली की पूजा पे ज्वाइन कर सकते हैं ना सब लोग जूम से, जब हम कर रहे हैं। चलो शाम की जो होती है ना घर में, वो वाली। चलिए ठीक है। अरे वाह नीलिमा दीदी यार, यस हैप्पी दिवाली सभी को। हमारे यहाँ अभी बजा है रात का 1:45। ओह माय मैं गॉड, ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। 1:45 बजा है रात का। मैं बहुत ईगरली वेट कर रही थी इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। एंड एक्चुअली मैं बताती हूँ, इट वाज मतलब जो मैंने डिसीजन लिया रात को जगने का, वो बहुत अच्छा डिसीजन था, बिकॉज इट्स एन आई ओपनर प्रोग्राम, नो डाउट इन इट। शेफाली जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली हमको जो ये एजुकेशनल आपने प्रोग्राम दिया, और अहिंसक दीपावली में तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, हो भी सकता है। सो एक्चुअली नाउ आई थिंक आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज लॉट्स ऑफ स्टफ फ्रॉम व्हाटएवर आई लर्न टुडे। तो रात का जगना मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल है। नहीं मतलब ये सो मच, हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। एंथुसियास्टिक पर्सन हो और कितने मोटिवेटिंग हो आप अंदर से, मतलब ये दिखाता है रात को इतना जग के आपने देखा, अमेजिंग। एंड आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं नीलिमा जी, आप अमेजिंग, आप पूरा ऑस्ट्रेलिया को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, खूब आपकी सेवाओं की खूब अनुमोदना, खूब अनुमोदना। हम तो आप जो बताए जा रहे हैं उस पे चलते जा रहे हैं शेफाली जी। बहुत सुंदर, आपके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं हम तो। नहीं है, आपका खुद का बहुत अच्छा है भाव, बहुत सुंदर है और बहुत बढ़िया। और सारी टीम को, सब लोग जो लोग भी आए, जिन्होंने भी पूरा क्वेश्चंस पूछे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सेवाओं से ही पाठशाला चल पा रही है। सो ऑल द टीचर्स, दीक्षा जी आप इंडिया से जुड़े, आपकी भी बहुत रात हो रही है, थैंक यू सो मच, इट वाज सो अमेजिंग टू हैव यू। And really, it was nice to have this kind of talk with our team and then present the videos. I hope सबको मजा आया होगा। My son, he tried the glitter video. He just baked the salt in the oven. I was sitting here. He asked my husband that I just want to bake it, and he made the glitter as well. Wow! And he gave me the lesson that please stop buying. So nice. Yeah, that's so good. तो सफल हो गया प्रोग्राम इतने जल्दी। प्रैक्टिकल यूज हो भी गया। हाँ, दीक्षा जी I'll share the photos very soon. Yes. Happy Diwali. कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? Congratulations, Shefali. जय जिनेंद्र अंकल, सो नाइस टू हैव यू। हाँ बहुत सुंदर। आपको ये प्रोग्राम जैना को भेज दो, वीडियो सबको भेजे। हाँ ये हाँ मैं जैना को भेज देती हूँ, यूट्यूब लिंक तो है। मैं भी
I can send to my friend. हाँ, तो अंकल ये लिंक तो है, यूट्यूब की लिंक है, इसी पे रिकॉर्डिंग है, तो आप भेज दीजिए सबको। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। सब जगह, और जैना में भी आप भी भेज सकते हैं, मैं भी भेज दूंगी। और ओके। जहाँ पर भी आपको लगता है सब जगह आप बिल्कुल भेजिए। तो अच्छा है, जितना लोग लाभान्वित हो सके उतना अच्छा है। नमस्ते, हैप्पी दिवाली, नमस्ते। यू अंकल, हैप्पी दीपावली एंड सो नाइस, आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। Anyone else want to say anything? Yes, I want to हाँ, say. बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, First of all, happy Diwali to all of you. And you did a very mind-blowing job, actually. We learned more about Ahimsa Wali Deepavali. And we definitely do this all the things in this Deepavali festival. And पर actually last one का जो था ना सीड बॉम्ब, वो परिणीता ने पहले बनाया था, और she donate that on this Teachers Day occasion to all her teachers also. wow, very nice, amazing, amazing, amazing. She did that. लेकिन अब हम वो क्रैकर्स का भी बना के देखेंगे इस बार। वो अच्छा लगा मुझे, है ना। तो मतलब कुछ क्रिएटिव आइडिया हो जाएगी, बजाय वो चढ़ाने के वो बच्चे बैठ के उसको उगाएं, तो उनको और मजा आएगा। हाँ, वो अच्छा है, वो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, थैंक यू, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। थैंक यू सो मच, हैप्पी दीपावली टू यू टू। और कुछ कोई शेयर करना चाहेगा? आप लोगों की खूब रात हो गई है, आप इतनी रात को जग के देख रहे हैं, दैट इज अमेजिंग। चलिए, अब आप सबको एक बार वापस हैप्पी दिवाली, गुड नाइट। हैप्पी दिवाली to all. Thank you so much. Once again, happy Diwali to everyone. You made our day. You know, आपने रात को इतना जग के देखा, मतलब you really liked it. That's very versatile. Actually, Shefali ji, my husband told me. Actually, हम मूवी देख रहे थे दोनों. So मूवी देखने के बाद क्या हुआ कि ये बंद हुआ, ये बोले हे तुम्हारा दिवाली का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। मैंने कहा रियली? यस, मैं तो वेट कर रही थी। एंड स्ट्रेट अवे लॉग इन करके एंड आपने स्टार्ट किया ही था। परफेक्ट टाइमिंग्स, एक्चुअली आई जॉइन। वेरी नाइस, तो बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम हुआ है ये। और इसमें बहुत सारी चीजें हम यूज भी करेंगे, और मैं मेरी फ्रेंड्स को भी कहूंगी यहाँ पे कि दे शुड एक्चुअली यूज ऑल दीज ब्यूटीफुल आइडियाज, और जो अहिंसक दिवाली जो है हमारे जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, एंड इनफैक्ट एनवायरमेंट एंड बायोडिग्रेडेबल स्टफ जो है उन और ज्यादा अवेयरनेस लाने के लिए, हमारे जो अर्थ है उसके प्रति और हम समता भाव रखें, उसको और भावना जगाने के लिए आई विल ट्राई टू टेल माय फ्रेंड्स दैट यूज दीज ब्यूटीफुल आइडियाज जो आज आप सब वंडरफुल टीचर्स ने जो किया है, इसमें बहुत अच्छा लगा। अपलोड टू एवरीवन। And we are putting this on the Google Classroom. तो Google Classroom में इस हफ्ते ना कोई क्लासेस नहीं है, बच्चों को यही एक्टिविटीज बनानी है, जो भी ना उनके वीडियो we are going to put into the Google Classroom. तो आपके ऑस्ट्रेलिया में भी will put it up.